Welcome Aetashaa and Gaurav to the live. Thank you. Finally. So we'll be just waiting for 2 to 3 minutes for people to join in. Okay, there are people joining in. So we'll just wait for 5 minutes. Y'all can say whatever you want to say to your fans. Like, What a bright sunny day. But it is, yeah, good to start a day with a live with all of you guys. And I know it's been long due. काफी time से, like it's been 8-9 months I've joined the show and we have never had a live together. Never. So it's a good feeling to go live. We're quite excited, just like all of you. everybody is saying hi. 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 बहुत दिनों से वेट कर रहे थे आपके लाइव का. हम भी. Yeah, me too. So हमने ना कुछ क्वेश्चंस निकाले थे ऑलरेडी. अभी आस्क्ड योर फैंस कि आप हमें क्वेश्चंस भेजो. तो ये थोड़े क्वेश्चंस हैं जो आपके फैन को आपको पूछने हैं. सो आई जस्ट लिस्ट देम अभी आपके लिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू इज, आपको क्या प्रेरणा देता है अबाउट अहिल्याबाई? Okay. As in पहले आप बताइए. I think प्रेरणा तो बहुत सारी चीजें हैं. She had qualities that each and every one of us we need to imbibe at least some of them. But I think the most important thing मुझे जो लगती है कि उनका जो empathy और compassion था towards लोगों के troubles या जो भी दुविधा थी उनकी, उसके towards जो उनका compassion था, और not just that feeling of empathy but rather having that attitude कि ये problem solve होना चाहिए और हमेशा के लिए solve होना चाहिए. That is the best part. Is the most important thing, because I feel that is the most important and inspiring thing for me is in आजकल के ज़माने में हमें टाइम ही नहीं मिलता दूसरे लोगों के बारे में सोचने के लिए. So we are so busy and engrossed with our own lives that we don't even think of, you know, like एक छोटी सी हेल्प मेरी तरफ से मैं कर दूँगी तो किसी और के लिए तो वो बहुत बड़ा चेंज हो सकता है कि हम कोई सोचते ही नहीं है. We are just busy with ourselves. So that little bit of help, a little bit of kindness, or a little bit of attitude of, you know, like, why not? Why shouldn't I help that person? वो सब भी missing है. So I think that's the most inspiring thing for me. Right. I think about me also, what I think is just to take that answer forward. Ki, having that intention is one thing, and doing it and going out of your way, and most importantly, after the kind of tragic life she's had, मतलब उनके अपने पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा त्रासदी हुई और उसके बाद भी she never left, or she never let her personal life take over, you know, over her, and she grew above that, and she was for the people. So this is a very rare quality, which is why उनको देवी जो है कहा जाता है, because this is a godly you know thing to have, कि आप अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ के you live for the people. So which is why उन्हें इतना प्यार और रिस्पेक्ट दी जाती है. Another question for both of you. आपको ये रोल चूज करने का एक्चुअल मोटिव क्या था, या आपने ये रोल कैसे चूज किया? बताओ आप. You start. I'll start first. So Just be a little loud, guys. Your fans are saying you're not audible. हाँ, a little loud. okay. Full order. So about this role, first of all, on TV, ऐसे roles मुझे लगता है कि especially talking about my role, Khandarao, is a very grey character, and या तो contemporary roles होते हैं या फिर बिल्कुल mythos वाले roles होते हैं, which are very different. So this had a best of both worlds, कि वो realistic भी है character बहुत, at the same time it's a historical character. So with that grandeur, with that grandness, you still have all those very minute complexities, very real character. Like for me, Khandarao was a very real character. So I was instantly hooked with the idea कि वो ना तो black है ना white है. He's a very real character. मतलब जैसे लोग आम जिंदगी में होते हैं, they have they have all shades. तो ऐसा कैरेक्टर टीवी पर रोज मुझे जीने का मौका मिले, जब मुझे ऑफर
genuinely had not a single reason to not go for it. So yeah. I'll answer this very honestly. In primitive years of your career, we don't have a lot of standing offers कि इसको decline करके हमें ये choose करना है. After 20-30 auditions के बाद हमें एक show you get selected. So this was like that for me. I had actually auditioned for Ahilyabai in 2020 lockdown के भी पहले. But it was very ground level पे सब काम चल रहा था. There was this one particular script that was given to all the ladies of all age groups. फिर उसके बाद तो लॉकडाउन भी हो गया. Then I did a different regional daily show. And when they were looking for lead, I think they thought of re-auditioning all the girls who probably were kind of, could resemble Ahilyabai. Or that time I got a call again. And I think there was I didn't have any other reason to say no to this because A, it is Ahilyabai. B, who will not want to play her considering so much of change and so much of revolutionary changes that she's brought about in the society and for women. So yeah, I had no reason to मुझे ना बोलने के लिए कोई रीजन ही नहीं था. जो ये अपॉर्चुनिटी आई मैंने उसको पूरे दोनों हाथों से उसके गले लगा लिया. And yeah, that's about it. All your fans are pouring in love and saying that you're looking pretty today and you're looking the most handsome today. Thank you so much. Thank you. Okay. Third question is कि आपका process क्या था to get into the character of playing your individual characters? Hello, Mr. Tell See, so ये show already 8-9 महीने के लिए चल रहा था. Okay, little Aditi and Krish had already set up the bar for both of us. So I think little bit of watching the show also helped. Their episodes and how they have picked up the mannerisms or how the team has built that character. Because अहिल्याबाई ने जो भी डीड्स किए ये तो सबको पता है, बट उनकी निजी लाइफ में वो कैसी थी या उनका वॉइस कैसा होगा या उनकी फीचर्स या उनकी फिजिक कैसा, ये बहुत इतना डिटेल में ज़्यादा लोग नहीं जानते. तो वो ऑलरेडी उन्होंने सेटअप कर लिया था. एंड इट वाज रियली अमेजिंग. पीपल वर लविंग Aditi and Krish. So that really helped watching the show, the previous episodes. But at the same time, I think the creative team of Dashmi also helped me with a lot of I was recommended this book called Karma Yogini, which is written by Vijay Jadekar. And there's one more book that my relative had given me from the library. उसका नाम ही Ahilyabai है. तो वो मैंने पहले पढ़ा और फिर Karma Yogini is still on the way. So that also helps to get a picture about the culture and how she had come from her village, Ohigar, and her interpersonal relationships with the Holkars, like her in-laws and Khandarao and everything. So that helped definitely. But I'll tell you कि सेट पे जाने के बाद जब you are on spot, you are like वो टाइम पे आप जो करते हो वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है. तो वहाँ पे जो हमारी डायरेक्शन टीम और क्रिएटिव टीम की जो भी इनपुट्स थे with the costume and all, you start feeling, do you agree, like in the costume you don't feel like we are from this century, you immediately transport हो जाते हैं कि we belong to that era. So all of these छोटे-छोटे चीज़ें ना it really वो add up होके that becomes this one particular body ऐसा. And also we were given training like horse riding and there was sword fighting that every action scene के पहले हमें थोड़ा सा rehearse करना पड़ता है. That happens and majorly मेरे लिए बहुत ज़्यादा difficult या ज़्यादा task मुझे लगा was picking up the language. So because I'm a person who was born and brought up in Mumbai, मैं बहुत ही impure हिंदी बात करती हूँ. I mix it with English and my mother tongue is Marathi, so it's everywhere. And so initial days में से हो जाता था that my genders used to go clumsy. फिर the ADs used to help me कि अरे नहीं ऐसे करना है, वैसे नहीं वैसे करना है. But I think over the period of time अभी इतने महीने होने के बाद I can see I'm still better than what I was. But yeah, वो एक historic character का लहजा पकड़ के वो ठहराव से बात करना, it's something that we don't do these days, so you have to pick it up. So yeah, it's just these small things that consolidated made it look the way it is looking. Talking about my character, I think when I was given the brief, जब मुझे बताया गया कि खंडेराव क्या है और कैसे इसको प्ले करना है, तो क्या होता है कि एक लॉन्ग स्टोरी फॉर्मेट में एक ब्रॉड आइडिया था कि खंडेराव क्या है, क्या होगा और उसका अंत कैसे होगा. But for me to pick it up, जहाँ से मैं शो में आया, there was just 2-3 basic
इमोशंस, फादर के साथ जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी थी, अहिल्या के साथ जो अटैचमेंट था, तो ये दो मेरे लिए बहुत, और मदर के साथ एक अलग टाइप का बॉन्ड और अटैचमेंट, अहिल्या के साथ एक बचपन वाला प्यार जो अब एडल्टहुड में तब्दील होने वाला था, और फादर के साथ, मल्हार राव के साथ उनकी जो एंग्स्ट थी, तो ये 3 इमोशन आई थिंक वो माय फाउंडेशन ग्राउंड। मैंने खंडेराव को इन 3 उस पे जो है बेस किया है, और अब नाउ फिर क्या होता है ना, एक बार आप सेट करते हो कैरेक्टर, देन इट क्रिएट्स इट्स ओन सेल्फ आल्सो, बिकॉज स्क्रिप्ट आती है, रोज सीन्स के हिसाब से हमको ब्रीफ मिलता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जस्ट टू जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि ये 3 इमोशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 रिलेशनशिप्स, और सब कुछ इनके इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहा है। Ojasvi has asked you, Aetashaa, what is the similarities between you and your character? Oh my god. I think there is one similarity, and that is courage and standing alone if you have to. These are 2, sorry, not 1. So these 2 characters, I think I share it, or that's the similarity मुझे लगती है मेरी और अहिल्याबाई के बीच में है। रीजन बीइंग कि करेज के तौर पे अगर जब भी कभी ऐसी बात आती है कि थिंग्स आर पुटिंग मी डाउन और आई एम गेटिंग स्केयर्ड ऑफ समथिंग, नहीं, nothing can hold me back. I surrender myself to the problem, and yeah, so that's one thing that I would say. And another thing is if there is a बहुत बार ऐसे होता है कि everybody has one opinion and you don't have that opinion, but you get rather you are scared of this whole idea that I'm going to be that one person who's standing alone than the crowd. So I was never afraid of that even when I was a kid, and I think even Ahilyabai wasn't afraid of that, because वो ज़माने में इतने बड़े चेंजेस लेके आना, एंड जबकि इतने सालों से वो प्रथा चल रही थी, वो ट्रेडिशन चल रहा था, उसके अगेंस्ट जाकर उसमें लॉजिकल रीजनिंग to stand out, really have an appeal towards change was something which I think both of us, I feel that is similar. I don't know. Next question for you, Gaurav. If you could tell us... Will you agree if these 2 things are similar? I was about to, but I'm also scared of you about everything. But that's true. These 2 things are true. Yeah, because he's like, oh my god, this person who is ready to what? तुम vouch कर सकते हो इस बारे में. I can. वैसे है या नहीं ये झूठ बोल रही है. बिल्कुल सच है. अच्छे विश्वास है. Next question Gaurav के लिए. आपके 3 favorite scenes of being Khandarao on the sets? Wow, बहुत सारे हैं. Honestly, मतलब अगर बेस्ट 3 की बात करें तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा. वो मैं सोच के आपको पर्सनली इनबॉक्स कर दूंगा. लेकिन बहुत सारे मैं बताता हूँ कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो प्रोमो में जो मेरा रिवीलिंग शॉट था, दैट विल ऑलवेज स्टे वेरी क्लोज टू माय हार्ट. वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए. वो सीन नहीं कहूँगा उसे, वो एक मेरे लिए मोमेंट जो था, दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट. एंड उसके बाद शूटिंग वाइज एंड मतलब एनर्जी वाइज नीलमणि खान के साथ जो मेरे सीक्वेंसेस थे, वेयर आई वाज टाइड अप और पूरा वो था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज वो उस रात ठंड बहुत थी जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे, एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट एवरीबॉडी वाज इन हुडीज एंड स्टफ एंड आई वाज टाइड वेयर फॉर इट, बट द फन ऑफ दैट सिचुएशन वाज सो मच कि मतलब मुझे ठंड लगी नहीं रही थी. मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो मैंने रेजिस्ट किया, मुझे मजा इतना आ रहा था कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. एंड उसके अलावा आई थिंक वन सीक्वेंस विद अहिल्या जो हम लोग पहली बार जब मिलते हैं और मतलब उसको so called the first night वाला moment where we just talk to each other and there is this full romantic feel to it. So shooting that was so beautiful because आप लोगों को जो दिखता है वो एक specific scene एक तरीके से होता है, हम उसको शूट करते हैं बहुत अलग तरीके से. वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. सो हमारे से फेवरेट गाने वाने बजते हैं बैकग्राउंड में, एंड देयर आर बिग फैंस जो आप हमारे बाल में चीजें उड़ते हुए देखते हो, वो पंखे चल रहे होते हैं, और वो फील के लिए पीछे हमारे फेवरेट बॉलीवुड म्यूजिक चल रहा होता है. सो
it's a very beautiful feeling. So that one scene and one scene with Nirmani, my opening shot, these three are my favorite scenes for now. But there are many. Can I answer this question on his behalf? I think for me the best scene Gaurav has done is the scene where he's shown to be drunk and उसके बाद जब उसको वो guilt आता है कि what if she finds out and he stabs himself. It's the best scene. Oh yeah, I forgot about that. Yeah, I'm surprised. One of your fan mentioned it here. That was the best. Oh yeah, that is my best scene. Sorry, that is my best scene. मतलब it is like ऐसा everybody on the set will also agree to this that was the best scene and he did it really very well. And जहाँ पे उसको possessive husband play करना होता है अहिल्याबाई के लिए गौरव एकदम दिल खोल के वो play करता है. So all those scenes also where he has to be that caring possessive husband, he does it really well. And sometimes my director has to tell him that I think nahi, right now you are angry with her, you're not supposed to love her. But वो script पर कैसे feel हो रहा है sir, करूँ क्या मैं? So I think all of those scenes also he does it really well. Thanks. But yeah, thank you for reminding. That was a very special thing. And now that we have mentioned about it, I really want to share this very personal fact about that scene. So that scene was shot over a period of 2 days. And मतलब टेक्निकली वो क्या था उसकी भी हम बात नहीं करेंगे. बट वो 2 दिन हम लोग 12 घंटे शूट करते हैं. 12 hours की शिफ्ट होती है. And then going back home and preparing for the next day is another homework. So basically for 24 hours and 24 hours total, 48 hours when you are in a certain situation, एक certain emotion में आपने होल्ड किया होता है. बिकॉज एक सीन का पार्ट आपने आज शूट किया है, उसी सीन का आधा हिस्सा आपको कल शूट करना है. सो आप लोगों को तो फर्क नहीं पता लगता, आई होप सो, और वही हमारा काम है. लेकिन उसको वो उस 5 मिनट के सीन को 48 घंटे तक होल्ड करके रखना, तो उन 2 दिनों में आई वॉज जेन्युइनली, मतलब आई डिडंट फील लाइक गौरव. Oh, that was a very beautiful moment for me as an actor कि I was just somewhere else. और वो जो स्टैब वाला मोमेंट था, and उसके लिए I really want to mention my director and my creative director Jackson sir and तुषार. they मतलब ये लोग पता है आधी ज़्यादा चीज़ें इनकी अपनी क्रिएटिव चीज़ें जो ये खुद अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, ये हमारे थ्रू उसमें डाल देते हैं. तो हम we are the medium and they are the ones who think of all these things. And he really helped me on the set. And this is one very special photo where Jackson sir is pouring the blood on my wound. मैं वो share करूँगा इस लाइफ के बाद पक्का. और मैं अपने full emotion में हूँ. And he's like pouring the blood on my wound. So all these are very special moments. Yeah. Thank you for reminding me. I thought तुम्हें याद होगा. Yashvi is asking, what was your first reaction when you met each other on the show? Like the first day you all met. First day. Was that look test वाला? Oh yeah, first day is that. So the first meeting ever, मतलब when we saw each other, it was raining that day और it was heavily raining. मेरा look test था, वो एक अलग कहानी है, मैं किसी इंटरव्यू में अलग से शेयर करूँगा कि क्या हुआ था उस दिन. बट मैं पहुँचा था, ये लोग सब शूट कर रहे थे. It was pouring and मैंने तो कुछ एपिसोड्स देखकर आया था as a homework. तो मुझे पता है कि कौन अहिल्या प्ले कर रही है, उनका नाम क्या है. She didn't know, like people on set didn't know कि कौन है आया है बैग लेके लुट्टे के लिए. So then finally मैं अपने कॉस्ट्यूम में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी फोटो. Yeah. You see the there's a first picture. photo. I don't know who's put it, but No. Someone else put it. Then I mentioned that this was the first ever picture taken of us on that day. So लीव के बाद 1 महीने बाद खंडेराव की एंट्री थी. तो तब तक I was already shooting. So I was on the set and he had come for the look test. और वो वाली पिक्चर है यहाँ पे. हाँ, तो उस दिन हमारी बात कुछ नहीं हुई थी because I just know and मेरे को सब इतना पता है कि there's the guy who हम उनको अभी look test देनी है वो गौरव है उसमें ना. बाकी I had no. Also I think काफी लोग टेस्ट कर रहे थे खंडेराव के लिए. तो she was also used to कि हाँ there were many options coming in and going out for Khandarao. So he might be just one of them. But so उस दिन तो हमने कुछ बात नहीं की. But the actual day when we spoke was the promo day. His promo. yeah. उसकी रिटर्न का जो प्रोमो था खंडेराव वो वाले दिन में हमने बहुत बात की. और उसके बाद एक्चुअल बॉन्डिंग अगर जानना है, फर्स्ट डे जब हुई थी, जब हमारा वो लोग मिलते हैं, जब फर्स्ट सीन हमने साथ में शूट किया, दैट वाज द फाइट that happens between Ahilya and Khandarao, the sword fight where my face is covered. She doesn't know that the guy she's fighting with
Miss Khandarao. So that was my first day of shoot with her, like proper. So she was very kind. मतलब मेरा बहुत देर से हम लोग sword fight कर रहे थे, मेरा हाथ दुख गया था एक point पे. So it was very unusual for a person to be so nice on the very first day, and I was really touched honestly. तो उसने वैसे आके हाथ दबाया, मैं समझ सकती हूँ. मेरा भी first day promo था, मैंने भी झंडा पकड़ा था, बहुत दर्द हुआ था. So I know how it is. You'll be fine. So that was like, that's where we connected. Yeah. Aetashaa, a question for you. The most beautiful experience of being a part of this show? There are so many, but Apart from meeting me. of course, let that be the first. Okay. But to answer your question, I think we have so many darbar scenes. Okay, so initially the darbar scenes are very stressful for me because they're always too big and there's बहुत ऐसा Dialogues. बहुत dialogues होते हैं, but वो scenes they are the decision making scenes, कि उसके बाद वो बदलाव हुआ या नहीं हुआ. Right. तो जब भी कभी दरबार के ऐसे सीन्स होते हैं ना, तो those first of all I'm very stressed initially, फिर धीरे धीरे से scene progress होता है, तो धीरे धीरे वो stress थोड़ा कम हो जाता है. But I think that every time she made an appeal with an honest appeal to bring about changes, and which later on turned to be a beginning of a revolution, or not even that, let's just say just alteration of a mindset at that particular time. तो वो जब भी finish होता है ना, तो that accomplishment वाला feeling that this is a beginning of probably a new chapter for women or for whatever that particular problem is, वो बहुत amazing लगता है. I don't know, it's a good feeling to stand in the darbar and appeal कि ये बदलाव लाना चाहिए या ये होना चाहिए, because there are people who are suffering, and just because these people have reached us, this number, but you don't even know there are so many other people who are not even, we are not accessible to them. So what about them? And there are people who need help, and this has to be changed. And of course she has all the logic and she has the reasoning and she has proofs and evidences सब है उसके ऊपर, उसके पास, अहिल्या के पास. तो वो जब भी वो मुझे play करना होता है ना, to stand in the darbar like a queen and actually play a part where someone else's life is dependent on what she said or what she presents in the darbar, is something that I think the feeling is really nice. It's a good feeling. That is a beautiful part. Gaurav, second question for you. People have loved your role as Khandarao. What has been the best feedback or compliment that you have received? मैं सेंटी हो जाऊंगा ऐसे. So yeah, I mean, to be very honest, अभी कल परसों मैंने एक पोस्ट डाला, तो there was this one comment. I read all the comments, by the way, just for all of you to know. मैंने लिखा भी था उस पोस्ट में. I read all your comments, all your messages, and अच्छे बुरे सारे पढ़ता हूँ मैं, रिस्पॉन्ड भी करता हूँ. But एक कल comment था एक पोस्ट पे कि you faced so much backlash in the beginning. Some people, like set of people didn't like you earlier. I wasn't aware of that, honestly. मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो I wasn't. मतलब ना तो मुझे किसी ने ऐसा फीडबैक दिए थे. एक मतलब 100 में 2 लोग अगर बोलते थे तो फर्क नहीं पड़ता था, वैसा वाला था. But जो वो बात थी कि you stood there and you proved yourself, मतलब मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा था, honestly. I was just genuinely playing my part. I was so in it. पहले 6 महीने कहाँ उड़ गए मुझे पता भी नहीं चला. But the best compliment, अगर उसकी बात करें, coming back to that, is I think लोग बोलते हैं कि यार हम किसी और खंडेराव आपकी जगह imagine कर ही नहीं सकते. You have just made it like that. तो it's really sweet of them. But मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम में से किसी ने भी खंडेराव को देखा तो नहीं है कि वो except his picture, कि वो वैसे कैसे थे, उनके मैनरिज्म क्या थे. सो ये जो उनका प्यार है, जो ऑडियंस का प्यार है, जो मतलब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है इतना होल हार्टेडली एज खंडेराव, एंड वो जो कांस्टेंट सपोर्ट है, वो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स मिलते हैं. लेकिन 6-8 महीने में जो मेरी ग्रोथ भी रही है एज खंडेराव, थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ है, तो वो मुझे ही बहुत मतलब पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. बट या मतलब जो एक कांस्टेंट सपोर्ट रहता है ना आप लोगों का, वो जेन्युइनली बहुत मैटर करता है.
हमारी लाइफ इसी में मतलब इट्स ऑल कंज्यूम ना, ये शो ने हमारी लाइफ कंज्यूम कर रखी है अभी, तो हमारी पर्सनल लाइफ बहुत थोड़ी सी बचती है। तो जिस चीज में हमने अपने आप को पूरा समर्पित किया हुआ है, माय गॉड समर्पित किया हुआ है, वहां उस चीज का रिटर्न जब अच्छा आता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी फुलफिलिंग फीलिंग एंड इट फील्स रियली नाइस एंड आई वांट टू टेक दिस चांस ऑफ थैंकिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन for being so supportive, so loving, so kind, and the kind of love you have given to both of us as Khandelya. Sometimes we sit and we wonder, yaar, ki matlab, wow, it's really nice, and you know, #Khandelya. So thank you so much for that. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, आपका सबसे ज्यादा बॉन्ड किसके साथ है ऑन सेट? सॉरी, मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेसिफिक डिटेल में आंसर नहीं दिया इस बात का कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वाला जो था, you also don't know about this, so it wasn't a compliment but I think more than a compliment. So again talking about the drunk sequence wala day, so you also might not know, so I was preparing for it. बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने पी थी क्या दारू एक्चुअली वो करने के लिए? Genuinely people ask me very seriously. Some actors do, but on TV and ethically I personally think it's not right. तो मैंने नहीं किया। Also मजा तब है जब आप craft use करके वो create कर सको। तो क्या हुआ था? Coming to the compliment, coming from my most important person in this show, like my director Jackson sir. So what happened? मैं set से अपने green room जा रहा था and wanting to be in that state of in that drunken state, I was being in that state even when we were not shooting. So I wasn't coming out of it just to hold it nicely. तो मैं set से अपने green room में जा रहा था और there were stairs. तो मैं stairs भी ना ऐसे चढ़ रहा था और topple हुआ एक दो बार. Some people saw it and they felt that ये तो भाई green room में जाके पी के आ रहा है. And they went straight to Jackson. और Jackson sir भागते हुए आए रूम में और मैं रूम लॉक किया था फॉर अ चेंज। उनको लगा कि मैं अंदर कुछ तो कर रहा हूँ। He started banging the door. Open the door, दरवाजा खोल, क्या कर रहा है? मैं खोला, मैंने क्या हुआ? तो मतलब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था अपने आप में कि between the shots they thought that you were actually, but this is what he does. Whenever there is an intense scene, he doesn't want to come out of that mood. He's totally given his heart, mind, body, mind, soul to that scene. So he doesn't come out. और वो हाँ, that is one what do you say, difference between him and me probably. तो वो difference क्यों है? Because मैं जितना उसमें रहना चाहता हूँ, ये उतना ही उसमें लाइट और स्विच ऑन ऑफ की तरह हो जाती है. Like rolling तक भी sometimes if there's an important call she has to take or if there's something happening, she's like very chirpy just before the shot and cut to she'll be intense. मतलब मुझे लगता है यार ये क्या है? These are just two different types of process. और वो अच्छा है because अगर हम दोनों ही ऐसे होते तो शायद कुछ और होता, but ये interesting है. But also like I feel like like for him, giving respect to both the processes, he likes to be in that mood. If I want to do a scene, probably at 4 o'clock in the evening, he might just start being in that mood since सुबह से कि मुझे वो करना है करके फिर. और मुझे पता है कि 4 बजे बहुत इंपॉर्टेंट सीन होना, तो मैं सुबह फुल आई बी लाइक चिल्ड आउट एंड लाइक आई वांट टू जस्ट थोड़ा सा मस्ती करूं और फिर मैं वो सीन करूं. तो एवरीबडी इज हाउ वी आर स्ट्रक वायर्ड एक्चुअली, बट इट्स नाइस. सो ऐसे कभी-कभी व्हेनेवर ही इज सिटिंग इन दैट मूड, आई एम लाइक शुड आई गो टॉक टू हिम, आर यू इन दैट मूड? तो ऐसे बात भी चला कि मुझे कॉफी देना, वो ऐसे ही आई एम इन दैट स्टेट. मुझे कॉफी चाहिए. और इमोशनल सीन के बाद में मैं थोड़ा उसमें असर में होऊंगा and she'll be like cut to, अरे सुनो ना ये करते हो. I'm like अरे नहीं अभी मेरा जोन मत तोड़ो यार, मुझे नहीं करना है. He's consciously trying to keep away from me because उसके वो क्या मतलब probably वो उसको disturb कर दूँगी मैं by being at it. So yeah. So the bond question. Whom do you bond with the most on the sets? You. मैं बताऊँ या मेरे साथ? It's for both of us. This was a confusing answer. You say that you want the best with me. ये बताओ. हाँ, I am very picky to bond with each and every person on this set. True. Yeah, with him also.
and with you're laughing. Am also. like जैसे मैं बोल रही हूँ कि स्पेस है कि मेरे सीन्स है हरिदा के साथ होते हैं लेकिन मेरे हर किसी के साथ उतने ही होते हैं. I have scenes with Malhar also. I have scenes with Sasubai. Everyone. I share my room with Harku, so she's again close to me. Sometimes it's only me and bullock carts and horses and villagers and Ahilya. So that time I miss all of them. So मुझे ऐसे होता है कि I have like a peculiar friendship with everyone. So with him it's a very love-hate relationship. हम लोग बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, but then at the same time वो ऐसा दोनों को वो गिल्ट आता है कि कुछ ज़्यादा बोल दिया हम लोगों ने एक दूसरे को. फिर again 2-3 दिन बाद everything comes back to normal. So it's like that. लड़ना झगड़ना is a part of it. It's a part of it. Petty fights. But then I share a very nice, sweet friendship with Malhara also because initially with this aura, ऐसे थोड़ा सा किसी को भी intimidate हो जाएगा ना कि why he doesn't want to talk to me, but no, he's not like that. He's very chilled out. And my Sasu, Gautama, Snehalata is also very nice. Harku and me, we are like, I think we've been in the Marathi industry also, and like now we are doing a Hindi show, so a lot of things are common for us. With him and Tukoji, I think I share a very badi wala vibe. They are constantly troubling me. I have to just take all the parishani that they create for me. But okay, that's that bond. But I think everyone, सबके साथ set पे बहुत अच्छा bond है. Gangobai is again a very nice person to have a conversation with because I just like having conversation with him. Because नहीं जैसे थोड़े elder मतलब हमसे जो बड़े होते हैं उनके पास बहुत जवान है. हमसे जो थोड़े उम्र में बड़े हैं उनसे ऐसा होता है कि बात करते करते ऐसे लगता है कि यार ये because of their experience, because of they've seen that part of life, they've seen 20s, so they've already like they're looking at us कि अरे हाँ ये सब हमने कर लिया है. वो वाला उनका एक must chill zone रहता है. So Gangubai is that वैसा. Anjali Dai is a very motherly figure to me. So whenever she comes, I'm like a teddy hug करती हूँ. So I have a peculiar friendship with each and every one of this. So yeah. Same, I think there are ऐसा कोई एक best bond तो नहीं होता because everyone is different. You have different kind of sharing with, let's say with her I can talk about almost anything and everything. With Gangoba I would talk about theatre, craft, more or just some like joke around here and there. But I think वो होता है कि सब लोग अलग अलग हैं. तो मेरा सबसे मतलब बातचीत होती है starting में जब मैं नया आया था तो I had so many scenes with her in the first place, then Gautama, and because I was new, so Jackson sir and I used to brainstorm a lot with each other because मुझे काफी share करते थे how do you have to go about your character. So I think being a director and he's always there तो वो तो है ही हमेशा, like that goes without saying. बाकी with Aetashaa I think starting में मतलब जिसके साथ ज़्यादा time spend करते हो obviously मतलब वो बन जाता है बॉन्ड. सो आई वुड से कि वो तो है विद हर दैट बोलो ये हमारी दोस्ती की काफी एम्बैरेसिंग से किस्से हैं जो हमें लाइव में नहीं बताने चाहेंगे बट ऑन प्रॉब्ली ऑन वेरी फ्रीयर नोट वील टेल यू अबाउट वो तो मतलब है ना जैसे होता है द नेम कॉलिंग पुलिंग द लेग और just नहीं बट या लाइक विद हर with Gangoba with all of them, even Malhar के साथ शूट करने में बड़ा मजा आता है. बहुत मजा, like just to tweak that question, बॉन्ड के बजाय किसका सीन्स करने में बहुत ज्यादा मजा आता है. अहिल्या, मल्हार, गौतमा, because सारे मेरे बड़े कॉम्प्लेक्स सीन्स होते ही लोगों के साथ हैं. बालों के साथ सिर्फ yes, no या नॉट वाला मामला होता है. But yeah, with these three people, it's really fun. And they're very different, all three of them while performing. Malhar also, like me, I would say, or me like him, he also stays in a zone. So there, our energies, combine exponentially. तो वो बहुत मजा आता है. With Gautama, she is a mother in real life. So she has that, मतलब मैंने उनको day one से, हालांकि age difference बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे बीच में, but उनको पता नहीं कि मैंने day one से आयशा की फिगर में ही देखा है, तो मेरे लिए वो एक मैं उनको आयशा भी बोलता हूँ. So वैसा वाला है सबके साथ. And I think everyone, the most important thing on our set is like the other day on the promo के दिन पे भी all of us were sitting together and we were जब भी like मेरा shot चल रहा था so these guys were like relatively a little unoccupied. तो वो लोग उनो खेल रहे थे. हाँ वो games खेलते रात बैठ के. Yeah, I think food is one thing जो everyone want to food.
ग्रुप बन जाता है, सब में लंच लेके आ जाते हैं, कभी इसके रूम में, कभी उसके रूम में, कभी वहाँ, जिसको जो खाना है वो खा लो टाइप. और बिटवीन द सीन्स हम लोग चिल करते हैं, गाने वाने सुन लेते हैं. So and it's really nice. Like even I remember जब मैं सेट पे आई थी तो these guys had already done the show एक साल पहले से ना. हाँ. तो उन लोगों ने भी ना ऐसे for example छोटी अहिल्या उनके साथ जो भी सीन होता है, example like सुखदा छोटी अहिल्या के सीन होता है, सुखदा used to be like very nice. Her character like she had to be nasty to Ahilya. So every time I initially she used to tell me that मैं ना starting में ऐसे करती थी. So like, do you want to bring that portion a little over here? So because I'm new to the show, they didn't let me feel like, oh, you're the new person over here. They were like, no, let's just all of us take this ahead. Like, it was very nice in that manner. And now that Valerie also come. Yeah, so now we were the one to welcome her like that. Her like that. And yeah, so it's, and I know Valerie since before, so everyone is nice on this. It's just amazing. Khushbu has asked both of you, don't you feel hot when you wear heavy costumes and jewelry? I would like you to answer this question first. I would like to answer it for her actually. Can I? Please, I would also like to know what you want to say about this. So, पहले मैं इन्हीं को करता हूँ, तो इसको बहुत करने लगी. She has huge issues with, मतलब वो इसका बस चले तो ये whatever, मतलब ये कट के बाद जितनी चीजें उतर सकती हैं ये उतार के, जितनी पॉसिबल चीजें उतार के आप कंफर्टेबली सबके बीच में बैठ सकते हो, वो कट पूरा होता भी नहीं होगा और ये से शैला छोड़ देती है कि बस अब मैं नहीं ले सकती. So yeah, मतलब वो है. Also the jewelry heavy होती है. Now you say But so ideally उसका your costume is more troublesome now because उसका पूरा full है. Maybe तो like फिर भी American saree like areas which are open, but my costume is very thick also and it's full covered. So these days I'm like an oven. गर्मी तो बहुत लगती है. But honestly मुझे आदत पड़ गई. अब मेरे को मतलब आज मुझे लग रहा है कि वाह ये कैसे कपड़े पहने हैं. These are very light. But now I'm used to that. It is quite, it's a task. You really have to agree, it's a task. And also, I think, see, the floor is all nice. Like we have, there are fans, ACs and stuff. But especially in the day, exterior scene, वो सबसे परेशानी वाले दिन है. और वो भी I think in this month. Right. Only these 2-3 months are right. October, November, December it was relatively good. It used to be like पूरा दिन धूप में शूट करने वाले थोड़ा एनर्जी कंजर्व होता था. But अभी तो जो rooms हैं हमारे for the fans to know. छोटे बच्चे चल रहे यहाँ से straw है सारे like sucking out all the energy and electrolytes. It's pretty much like that in these ones. But हमको क्या है वो full बीच में नींबू पानी टैंक रसना ये सब मिलता रहता है तो लोग खुश रहते हैं. And rooms में और महल में ACs वगैरह होते हैं तो मजा आता है. But गाँव she shoots the most in the गाँव and everywhere. Me being the prince doesn't go out that much. तो मेरे चरवाहे की बेटी थी तो हमें जाना पड़ता है तो गाँव में ही जाती है तो इनके काफी levels of tan भी हैं. So धूप का है इशू होता है. I believe कि मेरा tolerance थोड़ा heat की तरफ कम है और मतलब in the winter months also night shoots करते थे तो 9-10 बजे के बाद ऐसे शॉट आ रही ठंडी लग रही और मैं मस्त में like 1-2 बजे जो बहुत ठंडी होती थी तब फिर मैं शायद एक थोड़ा सा शॉल ओढ़ लूँ क्योंकि मेरा tolerance कम. But I really I have to give it to him with that full ये वो कैसे shoot कर लेता है. And that pagdi फेंटा होता है. But it's fun. With Indian is. Even tan is like one. वो अलग chapter है उसमें अलग से बात करेंगे. हम लोग कई बार events में जाते तो हमें ढूंढने पड़ते कपड़े so that tan ना दिखे. उस हिसाब से plan करना पड़ता है सब. So yeah. The next question is for you, Gaurav. How do you prepare in terms of workout and training for this role? बहुत ending आता है. You don't have to say that. बहुत ending आता है. मतलब so बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसके बारे में but एक मतलब मैं combine answer अगर दूँ तो ये है कि initially जब मैं आया था so my body shape was different when I was introduced and I think it kind of worked for that first few months because he had just come back from Gurukul और ये सब था story wise. उसके बाद अगर अब बात करें so yes I mean as we can all see I hope you all can see that there has been a physical transformation. There is it. And I had to grow bigger and more muscular. तो बहुत खाना पड़ता है यार. मतलब
I am just eating every time, almost all day. And then I had to shift my house closer to now where our set is. मैं पहले कहीं दूर रहता था, तो now I had to shift my place closer to the set so that I save those hours of travel. तो मैं अपने जिम और वर्कआउट में जो है कंट्रीब्यूट कर सकूं. So yeah, मतलब शूटिंग करके जिम करना ही पड़ता, कितने भी थके हुए हो. Sometimes I give myself a break, but otherwise वर्कआउट नॉर्मल रोज जरूरी है. एंड संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. So मेरे रूम में से कभी भी 6 अंडे लेके आते तो मुझे पता चला कि खंडेराव is about to enter my room. Somewhere around. और हम लोग जब खाना खाने बैठे तो I have a small meal and this guy is sitting with his eggs and there is food. एक दिन मैंने गलती से बोल दिया कि इतना खाएगा तू? तो यार ऐसा नहीं बोलते यार, ऐसा नहीं बोलते किसी के खाने में. Okay, sorry. But then after like it's all so that you know he look like, and you are, there is a change. I do that change. The episodes also you can make out. So yeah, that's that. Thank you. So Tanvi has a question कि what is the one quality of each other that the both of them like of each other? I'm not going to answer it first. ऐसा है क्या? I'm going to listen first. So जितना अच्छा मेरा आंसर होगा उतना अच्छा आंसर मैं दूंगी. पहले मेरी तारीफ करो अच्छे से, तब मैं तुम्हारी करूँगा. Actually there is more than one. अगर हम एक की बात करें तो कौन सी वाली बताऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ. हैं बहुत सारी. I think जो मैंने फर्स्ट डे वाली बात बताई अपनी, वो because that was the first quality of her that touched me, was that she was very supportive, she was very empathetic. कि you know, because एक महीने पहले उसका भी फर्स्ट डे रहा होगा, so she must have gone through the same thing. So that was very very simple. हम लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को, and sometimes actors have a very you know they have walls कि हाँ मैं क्यों जाऊँ या मुझे क्या फर्क पड़ता है, while behave professionally. Being professional is one thing, but that sensitivity towards the other person, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था first day, and I always tell her that कि so basically to term it as a quality is that she doesn't see कि कौन क्या है, actor है नहीं है कोई और है. She is very equal with everyone. She's very genuine with all of them. So that is one quality I really like about her. Don't cry now. I'm not crying. I'm thinking. क्या बोलूँ मैं तेरे? है ही क्या ही create करना पड़ेगा. Gaurav, I think is I never said this in front of you, but he has a very witty sense of humor. A very quick, very witty sense of humor. फटाक से कुछ तो बोल दिया यार ऐसे. और तो day one पे I knew that he's going to get a lot of warm energy on the set and everything, and we are different to another different मतलब काफी levels पे अलग-अलग है, but he is मतलब सच बताओ तो हम लोगों में वो अच्छा है. मैं उसे परेशान ज़्यादा करती हूँ और मुझे कुछ में तो ऐसा करेगी कि तू ऐसे करके you just cover it up with that. So he's like he's not a person who's going to probably be you know कि इसको तो मैं दिखाऊंगा करके ऐसे. ऐसे मेरे साथ तो नहीं है. I don't know what the rest of the world, but he's like that. So that is one thing about him, because बहुत बार ऐसे होता है ना that actors and all, like I won't deny, but they have like ये आज एक टिफ हो गया मेरा और इसका झगड़ा हो गया, तो that's just going to stain the relationship now. It's just going to be how it is. But with me and Gaurav, I think we fought also, then we've like been nice to each other. We've been a little extra nice also. So that is a good thing. और वो मन में भी रखता भी होगा, तुम दिखा नहीं है, but वो फटाक से भूल जाता है, and you know we again bounce back to the nice happy years. So that's the best part of it. मैं ज़्यादा परेशान करती हूँ, वो हमेशा he's always ready to forget and forgive things. Wow, I am not. That is so nice of you to say. रिया इज सेइंग आपके लाइफ में पूरा डेटा खत्म हो जाएगा यार मेरा, बट आई डोंट रिग्रेट इट दो. थैंक यू. मुझे नंबर डीएम करना, मैं रिचार्ज करवा दूंगा. Okay. Surbi Vyas is asking any scenes which made you emotional while acting. Oh yeah, so many. No answer first. There are quite a few. अभी का जो recent ताज़ा सीन है वो कल का या जो भी मैं शूट किया, getting married दूसरी बार,
तो I don't give away. but now they know now. Yeah. So generally like now marriage is in On the cards. now. So to see him और अभी उसके और वलरी के भी scenes होते हैं, तो ऐसे होता है कि now romance and everything is going to be in on their side because anyways our relationship is troubled thanks to the other characters. Plus there is a baby and then so that whole है ना वो entirety सिर्फ मेरे पास नहीं है ना अभी खंडेराव की, तो वो जो difficulty like if any other girl जो देखेगी Ahilya is my first love, bro. his partner getting married or rather with some other girl, तो वो वाला अभी था, तो that was very it was. Before I forget, I really want to say it because हमारे लिए वो सीन बहुत इमोशनल था. Starting वाले तो थे all those so-called nice machine moments, romantic scenes, वो तो बहुत प्यारे होते ही हैं. But that one scene, where I get to know of Ahilya's pregnancy, and then when the first time where I went down and I was talking to the baby. Yeah. That was a very, very emotional scene because that was one emotion which, as Gaurav also, I have never experienced in life. I've never become a father till now. So, to play that character and so वो बहुत सारे emotions होते हैं. Yes. So basically we do get very emotional while doing all these things. So this was like अभी recent fresh तो ये है शादी वाला like him getting married. तो उसके पहले का भी I think my parents' return was another this. And ऊपर से Ahilya's parents were so talked about on our set because एक के बाद तो वो थे नहीं, but सारे यूनिट के लोग इतना बात करते थे सुशीला और मानवी के बारे में कि उनकी return was going to be something which was probably dynamic and I think it was. तो वो बहुत अच्छी था. But one thing that I will never forget was Renu's exit from the show. Yeah. It was something else. Like They walk back and that walk back और वो last hug करके वो जो चले जा रहे. Yeah, I think even Madhura was a little touched because leaving your friend like that, I was just stunned. I mean tears, but it really that was the most emotional scene for me. बाकी तो है ही, but वो कुछ अलग है. बहुत सारे के लिए ना. बहुत सारे होते हैं. बहुत सारे होते हैं. So yeah, हो जाते हैं सेंटी हो गए हैं. Okay, let's take one last question. Who's the most mischievous on the set? अरे अब तक तो पता लग ही गया होगा कि who is the most mischievous person on set. नहीं but मैं भी करता हूँ मस्ती. So but she is very sporty also. वो I have to give it to her. मैं कभी भी ऐसे बैठे होती है तो मैं जाके इसकी चेयर में नीचे कर देता हूँ. Almost ground level तक ले आता हूँ. तो क्या मतलब we are all very mischievous in our own ways. So there's no one person. We are all very mischievous. But all over. the reason also that we can call ourselves mischievous because other people are quite. Yeah, well, all मतलब not. ये है एक bad habit ना. वो चलते फिरते लोगों को बोलते तुम्हें ना वहाँ पे बुला रहे हैं. Other person will go and ask whoever that person is sitting कि आपने मुझे बुलाया था और उसने नहीं बुलाया बताया. इसने बहुत बार किया है. तो मैं छुप-छुप लोगों को डरा भी देता हूँ. चलता रहता है. We have to keep ourselves entertained. Yeah, so it's nice, healthy. Okay, just a last comment. There's Rachna, whose 8 years old son is watching this live, and if you could say hi to him. What's his name? She's not mentioned his name. Her name is Rachna Desai. रचना देसाई, आपके बेटे को बहुत सारा प्यार और आपको भी. Rachna, उसको चूम लेना मेरी तरफ से and say hi to him and thank you for watching Rachna and your son. Thanks a lot. Thank you.